नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 13 मार्च 2023 सोमवार है। आज के लिए हमने ये सोचा था कि बाज़ार में बहुत वॉलेटिलिटी है, कोई इंट्राडे का रुख मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इस वॉलेटिलिटी में कम से कम वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार किधर कब घूमेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सुबह बाज़ार में ऐसा अंदेशा हुआ कि गैप अप हो रहा है और 100 अंकों का गैप अप भी हुआ। उस गैप अप की इतनी ज़बरदस्त बिकवाली आई कि ये देखिए, ये आज एकदम दाहिनी तरफ आज का कैंडल है, ये एंड ऑफ डे चार्ट है और आज का कैंडल शायद इसके ये बजट दिन के बाद सबसे लंबा कैंडल बना है और एक तरफी चाल थी। ये सुबह का गैप अप है, उसके बाद नीचे ही नीचे जाता जा रहा था बाजार। इस नीचे जाने में आप बाईं तरफ देखिए, जितने लोस थे वो सब आज टूट गए। ये तो डेली चार्ट है, इसको हम दूसरी तरह से देख लें। ये वीकली चार्ट है। वीकली में भी जो सितंबर में मंदी आई थी, जिसको हम लोगों ने सोचा बहुत नीचे आ गया, 16,700 तक पहुंच गया, हम वहां पर पहुंच गए हैं और काफ़ी ऊपर से चले हैं, तो ये मंदी और तीव्र दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर बाज़ार में मंदी का वातावरण है, उतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे किया जाए वो उतना सरल नहीं है जितना सुनने में लगता है कि मंदी है तो बेच लो। कभी कभी इंट्राडे रैलीज आती है, कभी गैप अप्स होते हैं। वॉलेटाइल मार्केट में हम ट्रेंड तो समझ रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ने के तरीके नहीं मिल पाते हैं। इसलिए वॉलेटाइल बाज़ार में कई बार हट के खड़े हो जाना चाहिए, चाहे मंदी का ट्रेंड हो चाहे तेज़ी का। जब वो वॉलेटिलिटी कम होती है तभी उसकी ट्रेडिंग संभव होती है सरलता से, और अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। थोड़े दिन रुके रहिए, अपने आप ही ये वॉलेटिलिटी कम होगी। अगर हम इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो हमको फिर कोई इंट्राडे का सेटअप चाहिए। हम लेवल्स पर इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल्स तो कब टूटते हैं कब घूमते हैं उसका कोई अंदाज ही नहीं है। वोलेटाइल मार्केट से ना लेवल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। ये मैंने आपको ये सेटअप कई बार दिखाया है पहले भी। ब्लू का मतलब है हम अप ट्रेंड में है, लाल का मतलब है डाउन ट्रेंड में है। ये लेवल्स है डाउन ट्रेंड में बिकवाली के। तो लगभग 10:20-25 पर बिकवाली आई थी आज। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में शाम को 3:20 तक कोई खरीदारी आई नहीं, इतनी ज़बरदस्त मंदी थी। तो इस तरह का कोई सेटअप आप काम में ले तो आप कम से कम इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकते हैं कि भाई कम से कम एक सिस्टम तो है, एक पैटर्न तो है। लेवल्स का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था जो आप चार्ट में देख भी सकते हैं। तो अगर आप एट ऑल ट्रेडिंग करना चाहें तो इस तरह का कोई सेटअप ले लीजिए, वो भी सिर्फ इंट्राडे। गैप्स के कारण एंड ऑफ डे ट्रेड्स का कुछ पता नहीं कहाँ जा सकता है। नहीं तो थोड़े दिन वेट कीजिए, ये वॉलेटिलिटी कम होगी, फिर ट्रेडिंग का माहौल बनेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट्स देते रहिएगा। जय हिंद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी and today is March 13, 2023 Monday. The view for today was that markets are very volatile and the best trade would be not to trade at all or to trade with the lowest possible volume. And if at all we want to trade, then we should catch intraday trends rather than look at end of day carry forward positions. The reason is very simple. In a volatile market, what happens today evening is not necessarily what will happen tomorrow morning. In a trending market, the trends continue. In a volatile market, a down close can lead to an up close tomorrow, up open tomorrow. Something can happen during the day. In 5 minutes, markets can move 100 points. So theoretically nice, but in practice it is almost impossible to capture such moves. And that's what happened today. The market was supposed to open higher. It opened 100 points higher. And then after opening 100 points higher, look at this chart. This is a daily chart. This is today's candle. This is where the market opened and went up 100 points in the first 40 minutes. And from there it started sliding and went down 1, 2, almost 300 points during the day. So it's very nice to know that this was a big trend and we could have caught it and then we could have made so much money. In reality, would you be buying or would you be selling? If you see a 100-point gap up and see the markets come down and stop somewhere here, would this be a buy or dips opportunity, or would you sell a 100-point gap up? No, the answer is not now, because now we know what happened. The answer is during trading hours, and that answer would be very difficult to find. That's why volatile markets are best left alone. It's not just the daily chart. Look at the weekly chart.
Now you can see there's a steady downtrend in the weekly chart. Prices have come down almost to the September lows, almost. So the idea is that we could easily have gone short from the beginning and taken only short positions. But it's not as easy as it looks. What about this? This is a big up move. And then 2 weeks of sideways moves. Maybe the trend was stopping here. And then 3 weeks of an up move. From this low to this low, anyone going short would have been literally butchered. And what about this? Are we going to close? Is this the end of the downtrend? So in a chart after the event, it's very easy to say this should have happened, this should have happened. But in reality, corrections are difficult to trade, and this downtrend would have been very, very difficult to trade on the downside. And of course, it was difficult to trade on the upside. So once you sense that volatility has increased, the best trade is to reduce your volume to the lowest possible. If you see that you are making profits, slowly increase volumes back to your normal, otherwise keep quiet. No sense in losing money and losing your capital. And there is no prestige involved in trading every day. Understand that. If at all you wanted to trade today, this is the 5-minute chart for the Nifty. I have shown you this chart many times. The blue was the uptrend. A downtrend started somewhere around 10:30 and a trade was taken on the downside. How strong the trend was. It went down all the way till 320. There was not a single blue bar in between. So if you have a setup like this, I don't mean this particular one, but something similar, then it is possible to take intraday trades, because you know that while you will not be protected by a V-shaped, say, sudden change of trend, if the trend changes slowly during the day, these setups will take you out. So you will get out for a small loss or maybe get some profit out of it. But that's the only way to trade these trades. Do not carry positions. You never know what will happen tomorrow morning. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.